Good morning, all of you. I am Rashmi Ninama from New Catholic Mission School, Jhabwa. It is a educational virtual class, and here I will teach you English of class 4th. So, are you all ready, children? Very good. Open your textbook, Breeze 1, Lesson 1. I am late for school by Gareth Lancaster. Children, Gareth Lancaster is a poet who liked to write funny poem for the children, especially for his son and daughter. Okay. Children, do you all remember those morning when you get up late for school and have to rush to get ready on time? That time you use some shortcuts to get ready on time so you can reach school on the correct time, right? So, this poem is also about a boy who is late for school. Okay, children, before we start, I would like to tell you that this is a humorous poem. Do you know the meaning of humor? Humor means which brings you laughter or fun. So yes, it is a funny poem. So let's start the poem. Yes. I am late for school. I got up late for school today and nearly missed the bus. I hurried down the stairs, wolfed my toast and caused a fuss. I got up late for school today. आज मैं स्कूल के लिए बहुत लेट उठा एंड नियरली मिस द बस और ऑलमोस्ट मैं अपनी बस मिस करने वाला था. आई हरीड डाउन द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स. ओके, वो जल्दी जल्दी स्टेयर्स से नीचे की ओर गया. वुल्फ माई टोस्ट एंड कॉज्ड अ फस. वुल्फ इट मीन्स ईट वेरी क्विकली और ग्रेडिली, किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी खाना. वुल्फ माई टोस्ट, मैं जल्दी जल्दी अपना टोस्ट खाया और उस जल्दबाजी में मैंने गड़बड़ कर दी. फज, गड़बड़. आई क्विकली थ्रू बुक्स इन माई बैग, माई पेन्स, माई लंच एंड शॉर्ट्स. ग्रैब्ड माई कोट फ्रॉम आउट ऑफ द कबर्ड, टुक माई बैट एंड बॉल फ्रॉम स्पोर्ट्स. आई क्विकली थ्रू बुक्स इन माई बैग, मैंने जल्दी जल्दी अपनी बुक्स अपने बैग में डाली. माई पेन्स, माई लंच एंड शॉर्ट्स, अपना पेन, अपना लंच बॉक्स, अपना शॉर्ट्स, सब कुछ जल्दी जल्दी उसने अपने बैग में डाल दिया. ग्रैब्ड माई कोट फ्रॉम आउट द कबर्ड. ग्रैब्ड मीन्स टू होल्ड और टू टेक समथिंग वेरी क्विकली विथ योर हैंड, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी में पकड़ना. ग्रैब्ड माई कोट फ्रॉम आउट द कबर्ड, जल्दी से मैंने अपना कोट कबर्ड से लिया. टुक माई बैट एंड बॉल फॉर स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के लिए अपना बैट बॉल भी ले लिया. आई स्लाइड अक्रॉस द किचन फ्लोर एंड हॉप्ड अराउंड द केट, देन एक्सपर्टली रोल्ड ओवर, जम्प्ड बैक अप एंड ग्रेब्ड माई हेड. आई स्लाइड अक्रॉस द किचन फ्लोर, मैं ऑलमोस्ट किचन फ्लोर पे एक तरफ से दूसरी तरफ फिसलते हुए गया. एंड हॉप्ड अराउंड द केट, और केट के अराउंड, केट के चारों ओर उछलता हुआ गया. देन एक्सपर्टली रोल्ड ओवर, जम्प्ड बैक अप एंड ग्रैब्ड माई हेड, और बहुत एक्सपर्टली मैं पीछे की ओर आया और अपना हेड ग्रैब किया. इट मीन्स जल्दी से पकड़ा. आई बेल्टेड आउट of our front door, spun round and swung it shut. So the bus was waiting for me. I felt I had time to start. I belted out of our front door. Belted means to walk very quickly. बहुत जल्दी जल्दी चलना, मूव करना. ओके, तो वो जल्दी जल्दी अपने फ्रंट डोर की ओर दौड़ के आया. Why? Because he was getting late for the school. Spun round and swung it shut. Spun, turn. ठीक है, वो बहुत जल्दी टर्न हुआ and swung it shut. उसने अपना डोर क्लोज किया. So the bus was waiting for me. उसने देखा कि बस अब भी उसका वेट कर रही है. I felt I had time to start. Start means
टू वॉक वेरी प्राउडली। ठीक है, तो उसने सोचा मेरे पास अभी भी स्टार्ट के लिए टाइम है, इट मीन्स आई कैन वॉक प्राउडली। I climbed aboard and then froze still and knew that things weren't right. My friends fell down in fits of fun and pointed with delight. I climbed aboard, जल्दी से मैं बस में चढ़ा, and then froze still, लेकिन अब भी मैं बिल्कुल डर कर घबरा कर फ्रीज हो गया था। And knew that things weren't right, और मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। My friends fell down in fits of fun, मेरे सभी फ्रेंड्स जोर जोर से हंस रहे थे। And pointed with delight, वो सभी मेरी ओर देखकर हंस रहे थे। My face went red, I couldn't breathe, for in my haste I knew I had forgotten to wear trousers, jumper, shirt, my socks and shoes. My face went red, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। I couldn't breathe, वो इतना घबरा गया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। For in my haste I knew, मुझे लगा, यानी कि उस बॉय को लगा कि जल्दी जल्दी में कुछ तो उसने मिस्टेक्स की हैं। I had forgotten to wear trousers, jumper, shirt, my socks and shoes. Oh, he forgot to wear his trousers, jumper, shirt, socks and shoes. So children, I hope now you understand the poem and try to learn the tough word, okay? So you can understand this poem very easily. So now let's discuss question answers or exercise. Okay, so lesson 1, I am late for school. Your first question is choose the correct option. First one is the poet got up early for the school, B, late for the school, C, quickly for the school. Yes, the right answer is B, late for the school. Second, the poet's coat was kept in the option A, bag, option B, box, option C, cupboard. Yes, the right answer is option C, cupboard. Third, the bus. Option A had left, option B was late, option C was waiting for the poet, and the right answer is was waiting for the poet. For one, the poet's friend. Poets के friend क्या कर रहे थे? Option A, laughed at him, B, praised at him, C, ignored him. And the right option is laughed at him. Okay. Now, the second question is read the lines from the poem and answer the questions. So, the first is I hurried down the stairs, wolf might tossed and caused a fuss. Okay, मैं जल्दी जल्दी में नीचे की ओर उतरा और जल्दी से अपना टोस्ट खाया. Okay, I told you the meaning of wolf means yes, ate something very quickly and caused a fuss. और जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दी, fuss गड़बड़. Okay, so our first question is who hurried down the stairs? कौन जल्दी जल्दी नीचे गया? Yes, the right answer is the poet. Okay, the poet hurried down the stairs. Second question, what does wolf my toast mean? So it means the toast he ate hurriedly. Okay, I told you earlier the meaning of wolf. Wolf my toast. Second, my friends fell down in fits of fun and pointed with delight. मेरे फ्रेंड जोर जोर से हंस रहे थे मेरी ओर देखकर. The question is, why did the poet's friends
fall down. उसके फ्रेंड्स क्यों हंस रहे थे? Yes, the answer is they fell down in a fit of fun. है ना, उनको उसको देखकर हंसी आ रही थी. That is why they all were laughing on him. Okay, the second question is, what did the poet's friends point to? Answer, they pointed to the speaker. Now, question 3, answer the questions. Question 1, what did the poet put in his bag in a hurry? Right? Do you all know? Remember? Pen, book, lunch box, right? So yes, answer is the poet put his pen, book, lunch box and shorts in his bag in a hurry. Question 2, what things did he carry for sports? We all know this answer. The poet carried a bat and ball for the sports. C. Question number 3, when did the poet realize that things were not right? पोएट को कब लगा कि कुछ गड़बड़ है, चीजें सही नहीं हैं? Can anyone answer? Yes, the poet's friends laughed at him. This is when he realized that things were not right. 4, why did the poet's face go red? उसका फेस रेड क्यों हो गया था? The poet's face turned red with embarrassment when he realized that he had forgotten to wear his trouser, jumper, shirt, socks and shoes. Okay. Now, question number 4. Write 2 rhyming words from the poem. Any 2 rhyming words. 2 rhyming words. Okay. So, 1. Shorts, spots. 2nd, cat, hat. 3rd, shirt, strut. 4, right, delight. Okay children, I hope now you understand everything. Good. Now we will meet in our next video, maybe next week. Okay, till then stay at your home and learn everything. Keep study. Thank you.